Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers, that is 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And do not forget to prefix 011, the STD code, before calling this number if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. And to answer our listeners' queries, today we are joined in our studio by editor Rural India, Harveer Singh. Harveer ji, welcome to the show. Thank you. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक पहुंचाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आज हम आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम में हम किसी कंपनी विशेष या किसी स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। वैसे प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106। हमारा तीसरा नंबर है 23717117 और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस के साथ में निशित कुमार। The headlines: domestic stocks gain more than 0.8%. Sensex closes above 53,150. Nifty settles above 15,800 level. Global share markets log robust gain and Brent crude prices hover around $113.50 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में 0.8% की बढ़त। सेंसेक्स 53,150 और निफ्टी 15,800 के स्तर के ऊपर बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजार में बढ़ोतरी का रुख रहा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $113.50 प्रति बैरल। और सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार पर नजर डालते हैं तो आज सेंसेक्स और निफ्टी ने 0.8% की बढ़त दर्ज की। वैश्विक शेयर बाजार के सकारात्मक रुख के चलते घरेलू कारोबार में वृद्धि हुई। सेंसेक्स 53,150 के स्तर के ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 15,800 के स्तर के ऊपर जाकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 0.82% यानी 433 अंक ऊपर चढ़कर 53,161 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.85% की बढ़त से 132 अंक ऊपर आकर 15,832 पर पहुंच गया। विस्तृत बाजार में बीएसई मिड कैप सूचकांक आज 0.87% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.57% की बढ़त में रहे। The Sensex and the Nifty today surged 0.8%. Both stock indices climbed amid positive global cues. The Sensex closed above 53,150 points. The Nifty ended above 15,800 levels. The Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 433 points or 0.82% to finish at 53,161. The Nifty at the National Stock Exchange added 132 points or 0.85% to settle at 15,832. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap surged 0.87% and the small-cap index ended 1.57% up. In the Sensex pack, 27 companies logged gains while 3 logged losses. Larsen & Toubro and Tech Mahindra both were the top gainers as they rose 2.7% each. HCL Tech surged 2.6%. Infosys and Asian Paint both climbed 2.2% each. On the other hand, Kotak Bank lost the most as it slipped 0.4%. Reliance declined 0.3% and Titan slipped 0.2%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all 19 sectors gained. Capital goods index surged 2.3%. IT sector gained 2%. Consumer durables and tech indices added 1.8% each. The overall breadth of the Bombay Stock Exchange trade was positive as shares of 2,360 companies gained while 1,067 fell. Shares of 148 companies remained unchanged. And we are joined in by our first caller from Noida, Suresh. Suresh? लगता है सुरेश ने हमारा संपर्क टूट गया है और हमारे साथ हरवीर जी हैं। तो हरवीर जी से सबसे पहले हम बात करते हैं। हरवीर जी, आज जो मार्केट का रुख रहा वो कहीं ना कहीं सकारात्मक हमें असर दिखा रहा है और लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अब देखिए, तीसरा स्ट्रेट सेशन था ये जिसमें लगातार मार्केट पॉजिटिव रहा है और
इसके पीछे बहुत सारा हमारा डोमेस्टिक रीजन भी है और ग्लोबल, जैसे अभी आपने न्यूज में पढ़ा ही है। क्योंकि जो सबसे बड़ी चिंता थी दुनिया की, एक तो पोस्ट ये जितने लॉकडाउन्स हुए थे कोरोना के चलते, उसके बाद चीजें पटरी पर आ रही थी, लेकिन जो इन्फ्लेशन है उसका प्रेशर इतना ज्यादा आया, उसके चलते इंटरेस्ट रेट बढ़ा और मनी टाइटनिंग पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपनाना शुरू किया। और यूएस फेड ने, अगर आप देखें, उन्होंने इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ाया। तो इससे क्या हो रहा था कि सब जगह इसकी जो इन्फ्लेशन का जो चिंता थी उससे मार्केट पे काफी एक दबाव आया था। और लेकिन अभी अगर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे यूएस के मार्केट ने अच्छा किया, इन्फ्लेशन का जो एक चिंता थी वो थोड़ी सी कम हुई है, ऐसा लग रहा है। और आगे शायद जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको उतने कड़े स्टेप नहीं लेने पड़ेंगे जितनी पहले आशंका हो गई थी, ये फैक्टर है। फिर जो एडवांस इकोनॉमीज हैं वो कुछ रिसेशन की तरफ गई हैं, तो उसमें लगता है कि डिमांड श्रिंक हो गई। और डिमांड श्रिंक होने में जो कमोडिटीज हैं, एनर्जी प्राइसेस, एग्री कमोडिटीज और जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज जैसे मेटल्स वगैरह जो होता है, उन सब का प्राइसेस थोड़ा नीचे की तरफ आने की बात हो रही है और कुछ आया भी है। इससे क्योंकि हम लोग, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो काफी सारा इंपोर्ट करती है इन चीजों का, उससे हमें बेनिफिट मिलने का एक चांस है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके मार्केट में, ये ग्लोबल अगर हम देखें, हमारे देश में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, एशिया के दूसरे जो मार्केट है उनमें भी, सब में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। और इस बीच दिल्ली से महावीर जुड़ चुके हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात कर रहे हैं। हेलो महावीर। क्या जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मार्केट्स की जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, उसमें पिछले 1.5-2 साल की जो गेन थी वो 1-1.5 महीने में ही खत्म हो जाती है, हो जा रही है। तो अब मतलब कैसे, किस टाइम तक रुका जाए और किस टाइम पे निकला जाए, ये समझ में नहीं आता है। देखिए, ये तो फैक्ट है कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें साइकिल्स होते हैं, बियर होता है या आपका उस बुल चलता है मार्केट। तो ये जो इन्वेस्टर है उसको ठीक से देखना है कि वो कब तक मार्केट में इन्वेस्ट रह सकता है, और आपकी अपनी कैलकुलेशन होती है। बिकॉज मार्केट इज ऑल्सो ए गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट में एक ही दिशा में सब कुछ जाता है या सारे स्टॉक एक ही दिशा में जाते हैं। जब मार्केट बढ़ता है तो उसी वक्त कुछ चीजें घटती भी हैं। तो ये आपका जो इंफॉर्मेशन का क्या लेवल है और आप कितने इन्वॉल्व हैं और कितना टाइमली डिसीजन लेते हैं, वो तय करता है कि आप यहां से फायदा लेंगे या आपको नुकसान हो सकता है। Our next caller is Atanu Saha from Kolkata. Atanu, we are afraid we have lost contact with Atanu. We'll get back to him as soon as possible. And before we move on, we'd like to remind our listeners once again that you can call in on our telephone numbers. That is 2331-4444, 2371-7106, and 2371-7117. And do not forget to prefix 011, the STD code of Delhi, before you dial these numbers. Harveer ji, and yes, again, we can get back to Atanu Saha. Atanu, can you hear us? Hi, sir. Namaskar. Yeah, namaskar. Good evening. Good evening, sir. And my question, Atanu from Kolkata. My first question is, what estimate about rainfall this year? If it is low or moderate or high, what would be its impact on our primary market and secondary market, sir? Thank you. Actually, IMD has predicted a normal monsoon this year, and monsoon progress is also normal till now. So, and this normal, there is a calculation or definition of normal monsoon set by IMD based on the long period average of rainfall. It is according to that. दिल्ली से तपोश है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो तपोश जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, आपका प्रश्न क्या है? जी, मेरा प्रश्न है, दुनिया में समस्त देश का पास ही रुपया बनाने वाला, अपना अपना देश का रुपया बनाने वाला मशीन है, फिर भी क्यों अपना अपना मशीन में ज्यादा से ज्यादा रुपया बनाकर और अपना अपना देश का डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों देश में आर्थिक संकट आते हैं, क्यों नहीं आर्थिक संकट से उभर पाते हैं? इसका थोड़ा सा आंसर देने का कष्ट कीजिए प्लीज।
देखिए, सिर्फ रुपया छापने से नहीं होता, आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी दिशा क्या है, ग्रोथ क्या है, आप कितना उसमें ऐड कर पा रहे हैं, तो ये उसके ऊपर तय होता है। ये ऐसा नहीं कि आपके पास रुपया अगर आप छाप लेंगे और उसी से, बिकॉज रुपया ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपका महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों के हाथ में ज्यादा रुपया आएगा और वही प्रोडक्ट वही सर्विसेज खरीदने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा। तो बल्कि महंगाई को रोकने के लिए रुपये का ये जो चलन है मनी का, उसको मनी को कंट्रोल किया जाता है, मनी सप्लाई को। तो ये इतना आसान नहीं होता इकोनॉमी को मैनेज करना और प्रॉस्पेरिटी को लाना। वो तो आपका जो इकोनॉमी में जो ऐड हो रहा है, आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप सर्विसेज में जा रहे हैं, आप एग्रीकल्चर का ग्रोथ है, आप माइनिंग कर रहे हैं, कितना आप उसमें एसेट्स को ऐड कर रहे हैं, उससे आपकी प्रॉस्पेरिटी आती है। नेक्स्ट कॉलर इज हसमुख डेडिया फ्रॉम मुंबई। हसमुख। First of all, good evening, Market Mantra. Good evening. My question is, I got two questions. One question, as sir was saying just now, can we say the worst is over and we have already bottomed out in the market? Question number two, Russia has defaulted officially today. Will it be having a negative impact on the global market tomorrow? Thanks. Yes, this is the latest news that officially after a century, after Bolshevik revolution, Russia has defaulted on record. So, because Russian economy is already under sanctions from advanced economy, mainly the Western countries. So, that is the impact of that. I don't think that earlier, what are we seeing since February, this Russia-Ukraine war, the implication of that war on the economy, global economy, and disruption in the supply chain and price rise of many commodities, it is already we are witnessing. This one incident will not make a very big impact now on the negative side. I think it is like that. Another point, it is very difficult to predict that market has bottomed out. दिल्ली से गगन है हमारे साथ। हेलो जी, नमस्ते सर। जी, आपका प्रश्न पूछिए। सर, ये आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है कार्ड के लिए, उसके बारे में जानकारी दे जरा। अपना प्रश्न दोबारा पूछेंगे? सर, आरबीआई ने डेबिट कार्ड के लिए कोई वो दी नई गाइडलाइन, उसके बारे में जानकारी दी सर, सिक्योर करने के लिए। देखिए, वो टोकनाइजेशन का इशू है, उसमें आरबीआई ने क्लैरिफाई किया, उसको अभी डेफर किया है। हमें उसका वेट करना चाहिए कि उसके ऊपर नया डिसीजन किस तरह से आता है और क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। Next caller is Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, can you hear us? Hello, good evening. Good evening, Gaurav. Harviji, my question is, how far we are able to secure our fertilizer supply this year, considering the war going on with Ukraine? And can we, do we also have a lot of import of seed for fruits and vegetables, especially seasonal fruits like watermelon, etc., from foreign companies, or we have our own seed? What is the percentage? How far we are strong in this seed supply for our farmers? Thank you, sir. On the seed supply, I say that more or less supply is through the domestic production only. There are public sector companies as well as private companies producing seeds, and farmers are also producing on their own their seeds. So I don't think that there is a problem on seed front, and it is not easy to import seed because there are some norms, sanitary, phytosanitary and quarantine, and it goes through a proper systematic route and approvals and check and this thing. Seed is not a commodity to import easily for anything. Another point you mentioned about availability of fertilizer. Definitely after this Ukraine and Russia war, there is a disruption on supply side. But even before that, China, one of the major supplier of fertilizer in the global market, stopped export, and before that, Belarus, which is also a main source, there was sanction against Belarus before this war, and prices started moving upward at that time. We have seen the last 1.5 years very high price in fertilizer, but now urea prices has come down roughly by 40-45% because excess production and the problem of storage in the global market and low demand due to from February to
May, there is a off-season, peak off-season, and there is a drought in Brazil, so there is very less demand and storage or advance import in Brazil for urea. Ammonia prices have come down, urea prices have come down. It is a good sign for us. And we import roughly 10 million ton of urea. On the other hand, this decontrolled fertilizer, particularly potash and phosphoric fertilizers, definitely we depend a lot on import. And in the international market, prices are still very high. We have secured supplies for Rabi and the current Kharif. Also, the information is that we have sufficient stocks of this fertilizer, but at a very high price. Government increased the subsidy in a big way in the last three times, basically, if you see in the last 1.5 year. So, I think there will not be any problem, but definitely the subsidy outgo is very high on fertilizers. फरीदाबाद से नरेंद्र छाबड़ा है फोन लाइन पर. हेलो नरेंद्र, आपका प्रश्न पूछिए. सर, मेरा एक क्वेश्चन है. एक कॉर्पोरेट ये अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल एक वर्चुअल एक हर कंपनी ऑर्गेनाइज करती है. मेरा ये जानना है कि क्या ये सभी कंपनियों के लिए जरूरी है या कंपनीज अपनी मर्जी से ये ऐसा कर सकती हैं? ये क्वेश्चन है सर. देखिए, ये कंपनीज करती हैं और जाहिर सी बात है कि मार्केट पे उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और ये अलाउ है अंडर कॉर्पोरेट लॉ. और कंपनी एक तरीके से बताने की कोशिश करती है कि वो क्या कर रहे हैं और उनका बिजनेस और अर्निंग्स किस तरीके से इम्प्रूव हो रहे हैं या क्या चैलेंजेस हैं और उनके नया जो अप्रोच है, जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो किस तरह बेहतर कर रहे हैं. नेक्स्ट कॉलर इज रविंद्र सिंह फ्रॉम दिल्ली. रविंद्र. हेलो रविंद्र जी. सर जी नमस्कार. नमस्कार, सवाल पूछिए अपना. सर, मैं कॉर्पोरेशन से दिल्ली से रिटायर हूँ. जी. दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हूँ. जी. और कॉर्पोरेशन एक हो गई है, 3 महीने से ना तनख्वाह दे रहे ना पेंशन आ रही. मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट से लोकल बॉडी और उनके अपने फाइनेंसिस को लेकर के चैलेंज है, लगातार बने हुए हैं. एंड मे भी नया जो सोल्यूशन आया है कि उसको मर्ज किया है, तो फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस करने का उसके पीछे कोई वजह हो सकती है. एंड आई थिंक दिस इज नॉट द राइट फोरम टू रेज सच ग्रीवेंसेस बिकॉज बेसिकली यू आर डीलिंग विद द मार्केट सिचुएशन हियर. And in the meantime, it's time to slip into a very quick commercial break, but do stay tuned because we have lots coming up on the other side. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से. लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान. अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग. डायल कीजिए 870-001-4242. नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम मार्केट मंत्र में. और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आशु दुग्गल दिल्ली से. हेलो. हेलो जी आशु, आपका प्रश्न पूछिए. Yeah, very good evening to all. My question is, I wanted to know the reason why there is so much increase in the price of the mustard oil. Approximately sometime back, mustard oil was 100 rupees a liter. Now it is somewhere around 200 plus rupees a liter. And is it true that the mustard oil is being imported from Ukraine at some point of time, and that is the reason contributing factor to the increase? And the second question is, why there is an increase in the price of palm oil? Like palm oil is also found to be increased, cost of palm oil is also being increased. And is there the possibility that the prices of mustard oil and palm oil can reduce over the course of time? Because in India, generally once there is a price hike, it is very less chances that the prices will come back to normal. Actually, there are certain factors behind this price rise. One thing I want to make it clear, we are not importing any mustard oil from Ukraine or so. Ukraine is a supplier of sunflower oil.
Ukraine and Russia, and definitely we were importing more than 2.5 million ton of sunflower oil from Ukraine and Russia, and the supply was disrupted due to the war. But overall, on edible oil prices, this price rise story started 1.5 year or 2 year back, because there was a huge drought in Indonesia and Malaysia, which is the largest producer and exporter of palm oil in the world. And palm oil is one of the big oil in the export market. Price rise of palm oil affects other oil also, like sunflower oil or soybean oil. These are the major oil, edible oil. So, and we are a net importer. We import our almost 2/3 requirement of edible oil, and palm oil is one of the biggest head share into that imports. So, many things happened. Palm oil price reached almost a decade high 1 year back. Then this war also started. But one more thing happened. And earlier, in case of mustard, I want to make it clear that blending was allowed to blend certain percentage of other oil into mustard. But then FSSAI, which is the regulator of Food Safety and Standard Authority of India, issued a notification that there is no blending will be allowed in mustard oil. So due to that, only mustard oil can be sold now in the name of mustard oil. We have more production this year. Production was good even last year, and but prices were going up, aligning with other edible oils. That is the reason that mustard oil prices are up. And I told you all the three factors: the palm oil prices as well as sunflower oil prices. रबी विपणन सीजन 2022-23 में सरकार ने अब तक 187,86,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। इस खरीद से 37,852 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति के साथ लगभग 17,85,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। वहीं 755 लाख मीट्रिक टन की खरीफ फसल और 105 लाख मीट्रिक टन रबी फसल समेत 860 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद अब तक की जा चुकी है। इस खरीद से 1,68,720 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति के साथ 125 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। And moving on to some other stories, Niti Aayog today launched a report titled India's Booming Gig and Platform Economy. The report was released by Niti Aayog Vice Chairman Suman Berry, CEO Amitabh Kant and Special Secretary Dr. K. Rajeshwar Rao. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Secretary Rajesh Agrawal and Director General National Labour Institute V.V. Giri also attended the event. The report is the first of its kind study that presents comprehensive perspectives and recommendations on the gig platform economy in India. The report provides a scientific methodological approach to estimate the current size and job generation potential of the sector. It highlights the opportunities and challenges of this emerging sector and presents global best practices on initiatives for social security and delineates strategies for skill development and job creation for different categories of workers in the sector. और जितेंद्र जुड़ चुके हैं खजुराहो से हमारे साथ में। हेलो जी जितेंद्र, आपका प्रश्न क्या है? जी नमस्ते, हरबीर सर को भी नमस्ते। 2 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है क्या होती है और इसके लिए सेबी और गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं रोकने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि जो कारपोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट है ये क्या है? थैंक यू। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कंपनी के अंदरूनी फैसलों की जानकारी है, वो जो कि उसके शेयर के ऊपर असर डाल सकती है, उसका इस्तेमाल करके मार्केट में लेन देन करे, वो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। और ये गैरकानूनी है, इसके खिलाफ नियम कायदे हैं और कई बार लगातार जो सेबी है उसने एक्शन भी लिए, बड़े कंपनीज के अगेंस्ट भी एक्शन लिए हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि जो कॉर्पोरेट के जो नियम है उनको आप एक जो नॉर्म्स हैं उसके लिए और जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंटली आप काम करें। बेटर कॉर्नर जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, आपके डिसीजन साफ सुथरे हो और कहीं भी आपने कुछ गलत तरीके से डिसीजन ना लिए हो और
मिसयूज ना किया हो कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उनका। और अब नजर डालते हैं रुपए पर। तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले लगभग एक समान रहा। रुपया $1 के मुकाबले आज 78 रुपए 35 पैसे के स्तर पर कारोबार के साथ बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.11% की गिरावट से 104.07 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक शेयर बाजार में आज ज्यादातर बढ़त देखी गई। लंबे समय तक मुद्रास्फीति की आशंकाओं को कम करते हुए निवेशकों में कारोबार के प्रति सकारात्मक सोच और अमेरिकी बाजार में सुधार के बाद एशिया भर के शेयर बाजार में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई। हांगकांग के हिंग सेंग में 2.4% और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.5% की वृद्धि हुई। उधर जापान के निक्केई में 1.4% की बढ़त हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.9% और सिंगापुर का टाइम्स सूचकांक 0.8% के लाभ में रहे। यूरोपीय शेयर बाजार में आज अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान मिलाजुला रुख रहा। लंदन के FTSE 100 और जर्मनी के डेक्स 0.6% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। फ्रांस के कैक में 0.2% की गिरावट आई। Moving on to oil prices were volatile today and trading in a narrow range as investors remain cautious about any moves against Russian oil and gas exports that might come out of a meeting of the leaders of the Group of Seven, that is G7 nations in Germany. In the intraday trade, Brent crude was trading at $113.55 per barrel, while the WTI crude prices were at $107.85 per barrel. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना आज 180 रुपए की तेजी से 50,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। जुलाई के अनुबंध वाली चांदी 625 रुपए की मजबूती से 60,375 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,832.60 प्रति औंस के स्तर पर, जबकि चांदी $21.45 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। Harveer ji, we would like to have your views on the crude. Actually, the moment we hear, as in that there is a psychological level beyond which, if the oil moves, there is a natural tendency among most of the major or minor economies that they would move a certain way. So, how do you see oil going on from here? And especially now with a fatigue kind of stepping in this Ukraine-Russia conflict, so to say, how do you see this moving in the near term? As you said, if you see that supply disruption due to this war, I think that effect is over now, because the Russian oil is available in the market, and we are also one of the major importers. China is the biggest importer, and all these three countries, US, China and India, are the major consumers. So, and due to this recessionary trend is being seen in advanced economies, it shows that demand for oil may go down. In that case, if prices will go on the negative side, and that is good for us if prices goes down. And with the market actually really playing very truant, is gold actually the safe haven that it used to be? Gold actually, if we see since last even more than 2 years, return is not very good in gold. Gold is a safe haven, but volatility in the price of gold remains very high and it has come down early from peak level. So investors may be very cautious to go for gold as a investment option. जी हरवीर जी, हमसे बात करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, चलने से पहले एक बार मुख्य समाचार फिर से। घरेलू शेयर बाजार में 0.8% की बढ़त, सेंसेक्स 53,150 और निफ्टी 15,800 के स्तर के ऊपर के बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजार में बढ़ोतरी का रुख और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $113.50 प्रति बैरल। Domestic stocks gain more than 0.8%. Sensex closes above 53,150. Nifty settles above 15,800 level. Global share markets log robust gain, and Brent crude prices hover around $113.50 per barrel. That's it in this edition of Market Mantra. See you again tomorrow. Till then, goodbye. Market Mantra.